Hello everyone, I welcome you to my channel Geo for Geography and myself Akshay. So guys, I am here as I already told you that I'll bring about the strategy videos for the geography, environment and the various topics of UPSC examination itself. And in that sequence actually, see I'm here now with the strategy video for the geography as a subject. You must be knowing geography is very keystone of the UPSC preparation in itself. And believe me guys, our strategy it shouldn't be based on some raw facts. ठीक है कि वो ऐसे नहीं होनी चाहिए कि जिसमें हमने एनालिसिस नहीं किया, हमने उसको प्रॉपर स्टडी नहीं किया एंड जस्ट बेस्ड ऑन someone has suggested, someone has told you कि ऐसे प्रिपेयर करना है, ये करना है, मतलब that is absolutely fine with that. Is one of the good ways, I should say rather, to make your strategy, but that shouldn't be the only way to follow them. You should have your own flavor, own understanding and own the inputs in your strategy itself, how you are going to deal with this subject. Because in that case जब कभी आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी, जब कभी कोई चीज आपको rightly understand नहीं होगी, confusion create होगा या फिर लगेगा यार ये strategy change करनी पड़ेगी, तब आपको reasoning चाहिए होगी कि ये क्यों करनी पड़ेगी या क्यों मैंने ये क्यों की थी. इन दैट केस अगर आपके पास वो सारी चीजें रेडी हो तो यू विल फाइंड कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. सो दिस पर्टिकुलर डिस्कशन इज नॉट अबाउट नॉट एज बेस्ड ऑन सम रॉ फैक्ट. As I told you, there should be a substance, for the case of this kind of preparation. Or here you'll find I am with the last 8 years trained analysis. This strategy is simply based on our 8-year trained analysis. कौन से 8 years के हम डिस्कस करेंगे? So this 8 years ranging from 2017 to 2024. So just like I did it for environment and ecology as well. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसे भी एक बार देख लेना है ना. So that will be pretty much helpful for you. Now, keeping this 8 paper in our understanding, now we should frame then कि अब हम 2025 2026 के लिए कैसे प्रिपेयर करें, है ना. This particular understanding will help you to align yourself more with the demand of the examination. अगर हम ये चीज नहीं करेंगे तो हम ज्योग्राफी तो शायद प्रिपेयर कर ले, हम शायद यूपीएससी के सब्जेक्ट प्रिपेयर कर ले, पर शायद ये होगा कि हम एग्जामिनेशन क्लियर ना कर पाए. सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, वी नीड टू बी प्रीटी मच टारगेटेड, दैट वी शुड have the right defined strategy. So with this now 8 years trained analysis, मैंने इसमें different sections बना रखे हैं, है ना, कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, जैसे ज्योग्राफी को अगेन what I have divided over here, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी. ठीक है. सो वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी दो डिफरेंट सेक्शंस में मैंने डिवाइड किया, और हर किसी सेक्शन को फर्दर देन यू विल फाइंड, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, देन रिसोर्सेज ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैप एंड लोकेशंस. राइट. इंडियन ज्योग्राफी भी इसी वे से, रिवर, लेक्स, ज्योग्राफी एंड ऑल दिस केसेस. सो यू विल फाइंड इस सारे डोमेन में पर्टिकुलर ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं. आई हैव प्रिपेयर्ड ए chart for this, and I believe this chart will help you to have your own understanding, derive your own understanding, and I have prepared some observations based on this. So I'll expect कि आप इस chart को खुद से भी study करोगे, and then my observations equally you will put in the perspective. ठीक है. So वन डिस्क्लेमर अगेन कि देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी हो सकते हैं, एज यू मस्ट बी नोइंग, है ना, किसी इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी होंगे, बट दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग कि इस पर्टिकुलर ये क्वेश्चन जो किस कैटेगरी में लाई करता है, तो बेस्ड ऑन दिस. सो चलो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम नाउ वी शिल स्टार्ट विद दिस. अब देखो दिस ट्रेंड एनालिसिस दैट इज फॉर 2017 से 2024. तो 8 इयर्स का हमने पूरा एनालिसिस कर रखा है. इसमें दो सेक्शंस में किया है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, वर्ल्ड एंड इंडियन.
and each of them you will find further being divided into this case. Okay, further being divided. A total for world geography, total for Indian geography has already been mentioned, and then the grand total is equally been mentioned. ठीक है, grand total is equally been mentioned, so that you will find कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस डोमेन में ज़्यादा आए हैं, कब ज़्यादा आए हैं, किस टाइम से आए हैं ना. अब यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो 100% कर सकते हैं, सो दैट वी कैन स्ट्रेटेजाइज आवर प्रिपरेशन अकॉर्डिंग. ओके, सो इफ यू वांट okay, so if you want to have a screenshot, so you can absolutely have screenshot of this itself. ठीक है, तो इसका screenshot ले सकते हो. Now, अब देखो, based on this, I have drawn some observations. Okay, what are those observations? You have to keep this thing in mind while preparing for the geography. ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से मेंस के लिए भी मैं ले आऊंगा, बट अभी के लिए now see observations and then accordingly our strategy how it should be. Now see, for the case of world geography, that is a pretty much clear fact. अगर in terms of number अगर देखेंगे हम, जैसे 2024, see 2024 14 questions and 2 questions from Indian geography. World geography 14 and 2 question Indian geography, maybe 2 से 3 question इधर भी हो सकता है, तो that way. In general 8, 6, 6, 3, 3, 2, 4. So you will find almost on an average like 7 to 8 questions you will find. Those are ranging around world geography itself. Okay, world geography. But world geography, even if you focus on the world geography, what my observations or this data suggests rather, that physical geography of the world is rather much more important than the human geography of the world when it comes to prelims. Okay, when it comes to prelims, human geography वाला section comparatively कम आएगा. अब human geography कहाँ है world की? You will find 12th का first जो title है, fundamentals, NCERT I'm talking about. Okay, so fundamentals of human geography, it is simply having this human geography. So for the case of prelims, if you want, see, I'm not recommending, but for the case of prelims, you can even sometimes, अगर time allow नहीं कर रहा है तो skip this book as well. Okay, so that way, but do remember this human geography along with the India, that of you will find rather important for the mains examination as well. तो ये चीज आपको याद रखनी है. Then second you will find for the UPSC climatology. See, this climatology that deals with weather, atmosphere, global warming, global cooling, then winds, climate types, this is rather most favorite area of UPSC. Almost every year you will find question on this. ठीक है, every year क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे ही जाते हैं ना, तो वी हैव टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग विद द क्लाइमेटोलॉजी. वो करनी ही पड़ेगी. कंसेप्चुअल भी है, पर्टिकुलरली नेचर ऑफ क्वेश्चंस आर बिट कंसेप्चुअल एंड समटाइम्स फैक्चुअल एज वेल, तो दैट इट शुड बी ऑन बोथ दिस एंड. थर्ड ऑब्जर्वेशन दैट आई हैव ड्रॉन is you will find oceanography is something जिसपे 1 और 2 क्वेश्चंस आ जाता है. ये 1 और 2 क्वेश्चंस, ये वर्ल्ड मैप पे भी हो सकता है, तो इन कनेक्शन विद समटाइम्स यू विल फाइंड दैट इज रादर इन कनेक्शन विद द ओशियनिक फिनोमेना, ओशन करंट्स हो सकता है या और भी कुछ फिनोमेना. 1 और 2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आएंगे. बट सी, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस, एक होता है ना कॉस्ट टू बेनिफिट, मतलब क्या, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना रिटर्न्स मिल रहा है. So for the case of oceanography, I believe investment is comparatively less and the results are comparatively on the higher side. Okay, so you have to see high, right? Prepare this oceanography topic as well and connect it with the current affairs. जैसे high sea treaties आ रही तो इस पे question expected होगा. Then fourth, you'll find the geographical mapping. That is rather the soul of this geography preparation, है ना. geography का मतलब soul क्या है, तो that is map, the globe itself, right? So you'll find map or location is rather a soul of this case, soul. And you'll find
UPSC in the world of 3 to 4 questions are now pretty much common with respect to world. Either you will find the map of border surrounding the Afghanistan, border surrounding the Ukraine, or you will find the Golan Heights wala question, you will find Mediterranean Sea wala question, or you will find in connection कि कौन सी river कहाँ drain हो रही है, right? So like many questions have already been asked. Western Ghats spread only in the 5 states, Pulicat Lake spread only in the 2 states, right? You will find number of questions were already been asked over on this mapping. So always remember कि मैपिंग वाला क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैपिंग एरिया, तो मैपिंग हम स्किप नहीं कर सकते. ओके, यू हैव टू कीप दिस थिंग. फिर now the new branch that is entering into the league now, राइट वैसे क्लाइमेटोलॉजी इज द मोस्ट फेवरेट, ओशियनोग्राफी कॉस्ट टू बेनिफिट एनालिसिस पे फेवरेट भी है, ठीक है. बट अब जो न्यू ब्रांच जो ज्यादा रदर एंटर कर रही है, जिसपे पहले वैसे कंपेरेटिवली कम क्वेश्चंस हुआ करते थे, ठीक है. इफ यू सी अकॉर्डिंग टू लाइक दिस एनालिसिस बेस्ड ऑन व्हाट माय ऑब्जर्वेशंस, 1718 में 1922 तक जियोमॉर्फोलॉजी पे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं है एक्सेप्ट एस्ट्रोनॉमी का कोई क्वेश्चन होगा तो जनरली यू विल फाइंड यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी वाज नॉट फोकस. हाँ, इट वाज फोकस ओवर इन द मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है. दैट इज ऑन रादर मेन स्पेसिफिक टॉपिक. बट व्हाट नाउ इफ यू कैन कनेक्ट द ट्रेंड, सी 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया and 2024 2 questions were asked. It simply means that I won't be surprised for the case of geomorphology, like say if in future like maybe in the upcoming examinations अगर geomorphology का weightage बढ़ जाए तब, ओके, जैसे अभी 1-2 क्वेश्चंस आ रहा है, पॉसिबली 5-6-7 क्वेश्चंस आ जाए बेस्ड ऑन द फैक्ट, बिकॉज दिस टॉपिक इज कनेक्ट वेल विद द जियोलॉजी एंड मच फैक्चुअल इन नेचर, है ना. फैक्चुअल तो कंसेप्चुअल कंपैरेटिवली कम है, तो फैक्चुअल वाला केस. तो यू विल फाइंड जैसे क्वेश्चन जो पूछा सेक्शन के बेस क्वेश्चन पूछ रखा है इस पर, तो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है. सो यू विल फाइंड कि ये जो क्वेश्चंस है, this topic is rather new in the list and is now trying to surprise us. So be prepared or prepare geomorphology equally कि अगर कभी in future the train would rather framer want to change the train, so you should find yourself well prepared for. Okay, I hope you are getting. So these are what observations of mine for the case of this world geography topics. World mapping is very important. Second, now the observation that connects well with the Indian geography, ठीक है. अब इंडियन ज्योग्राफी जब हम करेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी कहाँ से करेंगे हम? इंडियन ज्योग्राफी 2 बुक्स एनसीईआरटी के 2 बुक्स से पर्टिकुलरली, ठीक है. एनसीईआरटी के 11 के बुक से जो होगा सेकेंड टाइटल दैट कनेक्ट्स विद द इंडियन, ओके, इंडियन फिजियोग्राफी, ठीक है, जो इस सबका कनेक्ट होगा. फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, रिवर और ये सारी सब कुछ चीजें आएगी. एंड 12th की ये जो बुक है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, राइट. तो सॉरी, दिस इज ह्यूमन ज्योग्राफी. हाँ, या सो दिस इज व्हाट ह्यूमन ज्योग्राफी वाला. हाँ, तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट. अब अगेन ह्यूमन ज्योग्राफी सेक्शन कंपैरेटिवली कम पूछा जाएगा. दैट इज व्हाट यू मस्ट बी एटलीस्ट एज ऑफ नाउ प्रिपेयर्ड फॉर के इन एटलीस्ट इन 25-26 में तो ह्यूमन ज्योग्राफी पे उतना प्रीलिम्स में फोकस नहीं होगा जितना फिजिकल पे होता है, ठीक है. सो दैट इज प्रीटी मच क्लियर फैक्ट. तो हमारा फोकस होना चाहिए 11th वाले बुक्स पे ज्यादा. सेकेंड, नाउ सॉरी, द ऑब्जर्वेशंस आर फॉर दिस. ऑन एन एवरेज यू विल फाइंड 8 questions again ranging around this topic. So we cannot skip this topic. हम सोच भी नहीं सकते, है ना, because ultimately we are preparing for the civil services of India, so we should have a good enough understanding of the Indian geography itself. तो skip तो कर ही नहीं पाएंगे. Second वाला fact है that you will find questions on river, lakes are compulsory or mandatory, rather compulsory. In fact, you will find जैसे इस पे 1, 2 possibly 3 questions are what to be asked. Like say for example 2019 में you will find river and cities those are located. Then you will find कांवर लेक पे जो wetland डिक्लेयर हुआ था तो वहां से कनेक्ट है. या you will find कृष्णा, गोदावरी, तिस्ता, इंडस, है ना. हर किसी रिवर पे whenever it is in the current affairs the question were already asked in the examination.
So this particular topic, however, I believe is more of current oriented. ठीक है. So generally क्योंकि इतने सारे फैक्ट 10,000 स्ट्रीम्स आर देयर इन इंडिया, ठीक है, तो हर किसी को तो पूछ नहीं पाएंगे. बट द थिंग इज कि जो रिवर करंट अफेयर्स में होगी, यू विल फाइंड क्वेश्चंस आर मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड ऑन दैट पर्टिकुलर रिवर, लेक, वाटर बॉडी. ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई बिलीव वेरी मच इंपॉर्टेंट. थर्ड, इंडियन फिजियोग्राफी. Indian physiography. You will find Indian physiography is rather very much important. है ना? It is important as like 1 to generally questions. ठीक है, 1 or 2 questions you will find asked over on the examination. ठीक है, तो 1 or 2 questions compulsory you will find asked in the examination. ठीक है, अब this includes then mountain, Himalayas, North Plain, Western Ghat, Eastern Ghat, islands, and all those things. Then the next is you will find agriculture. Questions like on the agriculture. Okay, agriculture वाला case जिस पर knowledge, agriculture knowledge, तो it may be you can connect it with the cropping pattern. The crops, cotton पे पूछा, rice पे पूछा, which is the most water extensive crop, as in so questions were already asked. Yeah, in terms of area that is dedicated in comparison with the China, right? So that is what already been asked. Or you will find some kind of agricultural practices, the new agriculture practices. You can connect it with the environment and ecology as well. You can connect it over here as well, because agriculture rather connects well with the geography. So compulsory you will find 2 or 3 questions, I believe. कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, but yeah, almost you will find these questions are to be asked in the examination for sure. So these are the typical areas you have to focus a lot on. ठीक है, आई एम नॉट क्लेमिंग कि बाकी एरियाज प्रिपेयर नहीं करने या यही एरियाज प्रिपेयर करने, बट डू रिमेंबर यू हैव टू फोकस ऑन दिस एरियाज रादर कंपेरेटिवली high, and this is what see the trained analysis rather suggests us. I hope you guys are getting. अब देखो ये स्ट्रैटेजी, ये ट्रेंड एनालिसिस या ये ऑब्जर्वेशन को यूज कैसे करना है. तो जब स्टडी करना स्टार्ट करोगे, जब स्टडी प्लान प्रिपेयर करोगे, अकॉर्डिंगली इसको प्रिपरेशन में इंटीग्रेट करो, क्योंकि व्हेन इफ यू फेल टू इंटीग्रेट दिस ऑब्जर्वेशंस, राइट, तो दैट वोंट हेल्प यू टू prepare your strategy. So observations plus integration in your study plan. Integration in your study plan would rather help you to prepare your strategy. Okay, so you have to keep this in mind कि आप strategy accordingly prepare कर रहे हो. I hope this is pretty much clear to you all, है ना? And if you find any observation other than observation than this, so let me know as well in the comment box. That will be enriching for me as well. So I wish you thank you for watching this video till the end. If you do really like it, so please share it with someone else that really find it suitable, है ना, उसको भी help करेगा. And like, share and subscribe to our channel. Thank you.